हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फ्रॉम द चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 बायोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। These are the questions from page number 59 of the NCERT book. Who discovered cells and how? Robert Hooke discovered cells in 1665 while examining a thin slice of cork through a self-designed microscope. He saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. तो रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किया था 1665 में। उसने स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था जो कि एक पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ ट्री होता है और उसने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा था और उसने देखा कि उसमें कुछ हनीकॉम्ब टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और जिसे उसने नाम दिया था सेल्स। सो दिस वाज रॉबर्ट हुक। Why is the cell called the structural and functional unit of life? सेल को structural और functional unit of life क्यों कहा जाता है? Because as all living organisms are made up of cells, हम सभी cells से बने हैं। जितने भी living organisms हैं वो cells से बने हैं। Cells are also essential for performing various life processes required for sustaining life. Yes, cells provide form and structure, process nutrients and convert them into usable energy. ये important function है। Cells provide form and structure, process nutrients and convert them into usable energy. You have to write this in a proper way. Multicellular organisms have specialized cells that perform specific functions. So that is why it is the structural and functional unit of life. Now the questions from page number 61 are: Question number 1. How do substances like carbon dioxide and water move in and out of the cell? Discuss. हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मूव करते हैं सेल से अंदर एंड बाहर. So with the process of diffusion, इसे हम कहते हैं diffusion. The substance like carbon dioxide and water move in and out of the cell if the concentration level of carbon dioxide and water, whatever, carbon dioxide or water is higher in an external environment than that inside the cell. Water and carbon dioxide moves inside. In case of their concentration level is low, they move outside. तो इस तरह से ये process work करती है. Why is plasma membrane called selectively permeable membrane? Plasma membrane को selectively permeable membrane भी कहा जाता है because the cell membrane or plasma membrane is a biological membrane that separates the interiors of the cell from the outside environment. The plasma membrane is called selectively permeable membrane because it regulates the movement of substances in and out of the cell. वो रेगुलेट करती है उसकी मूवमेंट कोई भी सब्सटेंस की. इट मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम मटेरियल्स टू पास थ्रू इट एंड व्हाइल एट सेम टाइम इट ब्लॉक्स अदर मटेरियल्स फ्रॉम एंटरिंग थ्रू इट. तो उसको पता है कि कौन सी चीज को अंदर लेना है, किसको स्टॉप करना है, किसको ब्लॉक करना है टू मूव इन द सेल. So that is why it is called selectively permeable membrane. So it regulates the movement of substances in and out of the cell. It means that plasma membrane allows some material to pass through it while at the same time it blocks other materials from entering through it. Questions from page number 63. Question number 1. What is difference between prokaryotes and eukaryotes? अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के जो आपके इस पेज पे ये डिफरेंस दिया गया है उसमें कुछ ही पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, लेकिन हम यहाँ पर 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग दोज पॉइंट्स ऑल्सो. So number 1 here is prokaryotes don't have a well organized nucleus, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, well organized nucleus होता है. प्रोकैरियोट्स जो होते हैं they don't have nuclear membrane. मैंने पहले भी चैप्टर डिस्कस करते वक्त बताया था वैसे ही स्कैटर्ड सा होता है, ऐसे ही पड़ा होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स. उसकी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल आ जाते हैं आपका बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे हैं और यूकैरियोट्स में आपका अमीबा और अनियन सेल आ जाते हैं.
तो प्रोकैरियोट्स जो है साइज ऑफ द सेल इज दैट इज 1 to 10 microns और साइज ऑफ द सेल इज लार्ज इन यूकैरियोट्स दैट इज 5 to even 100 microns. Fifth point of difference is the nuclear region is poorly defined due to absence of nuclear membrane and known as nucleoid. तो यहाँ पे nuclear membrane जो है absent होती है. On the other hand, in eukaryotes, the nuclear region is well defined area surrounded by a nuclear membrane. In prokaryotes, a single chromosome is present. On the other hand, in eukaryotes, more than one chromosome is present. Membrane-bound cell organelles are absent in prokaryotes, and eukaryotes, membrane-bound cell organelles is present. Questions from page number 65 are: can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? ऐसे कौन से दो organelles हैं सेल के अंदर जो organelles होते हैं कौन से हैं जिनके अंदर अपने ही genetic materials होते हैं? तो वो है mitochondria and plastids. ये दो ऐसे organelles हैं which contain their own genetic material. Mitochondria and plastids. Both these organelles have their own DNA and ribosomes. तो इनके अपने अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं. रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. Number 2, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, then the cell will not be able to perform the basic functions. वो basic functions को perform नहीं कर पाएगा. Like that, like what? Like respiration, nutrition, excretion, etc. And this may stop all the life activities and may result in its death. तो life activities ये बंद हो जाएंगी और उस cell की death होगी. तो organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, then the cell will not be able to perform the basic functions. Why are lysosomes known as suicide bags? अब lysosomes को suicide bags इसलिए कहा जाता है क्योंकि in case of any disturbance of their cellular metabolism, for example cells get damaged, कोई भी problem आती है, कोई भी cellular metabolism problem आती है, तो lysosome burst होते हैं and the enzymes digest their own cell. ठीक है, इसीलिए इन्हें suicide bags कहा जाता है. Where are the proteins synthesized inside the cell? Proteins कहाँ synthesized होती हैं cell के अंदर? Proteins are synthesized on the rough endoplasmic reticulum. RER. The proteins are synthesized on RER, and the full form is the rough endoplasmic reticulum. यहाँ पर क्या होता है? Where the ribosomes are transiently attached. Ribosomes are sites of protein synthesis in a cell. तो ribosomes are the sites of protein synthesis in a cell. तो ये इसका आंसर है. Thank you so much. If you like the video, kindly like it, share it, subscribe it. Thank you so much.